Hey guys, what's up? Welcome to my channel Glam Up with Winnie. This is my very first video and I'm going to create this Karwachauth look for you and I hope you guys like it. So first of all, I'm going to use aloe vera gel as moisturizer. You can use any moisturizer that suits on your skin and I'm going to spread this very well all over my face. Now the next is primer and this is Insight long lasting primer. So मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से रब करूँगी इसको एंड जेंटली प्रेस करते हुए मैं अपने टी जोन को कवर करूँगी. एंड गाइज आपको जहाँ जहाँ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप वहाँ इसको अप्लाई करिए. एंड इफ़ यू वांट कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे देन नेवर मिस दिस स्टेप. सो लेट्स क्विकली डू दिस. Now this is Music Flower Gel Eyeliner and with the help of this angle brush I am going to fill my brows. Guys make sure eyebrows आप बहुत लाइट फिल करें, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं जाना है आपको. अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श करते हैं तो आपकी eyebrows बहुत फेक लग सकती हैं. Now I am going to set my brows with this brow comb जिससे कोई harsh line ना दिखे. And next I am going to use Beauty Berry Velvet Double Effect Concealer in the shade 01. So मैं अपने dark circles को अच्छे से cover करूँगी. एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. Now next I'll apply concealer on the entire eyelid and I'm going to blend it with the same beauty blender. Now with the help of this blending brush I am going to smoothen out my concealer. This is Romantic Beauty eyeshadow palette and I am going to use this color as my base color. Now I'm going to use this color and just blending it out. Now I'm gonna add this metallic shade and apply it on above crease areas and outer. नाउ फिंगर टिप की हेल्प से मैं सेम मेटालिक शेड लगाऊंगी जिससे थोड़ा डिज़ायरेबल कलर मिले. नाउ विद द हेल्प ऑफ
this small blending brush, I'm going to blend it very well. नाउ नेक्स्ट इज एलिटिन आई ड्रामा काजल और मैं इसको अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ. Now for the lower lash line, I am going to use this color with the same flat shader brush. अब मैं इस मेटालिक शेड को भी ऐड करूँगी. नाउ फॉर मोर इंटेंसिटी मैं थोड़ा और काजल लगा रही हूँ. Now I'm applying eyeliner. Firstly I'll draw wing on corner of my eye and then इसको inner corner तक join करूँगी. Next, this is CVB Lashes Stylist Waterproof Mascara. Now I'm going to use eyelashes. This is Swiss Beauty 3-in-1 palette and I'm going to use this highlighter and highlight my brow bones and inner V. Now next is foundation and I'm going to use Maybelline Fit Me foundation in the shade 100 and फिंगर टिप की हेल्प से डॉट डॉट करके फाउंडेशन को पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी. अगेन विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर मैं डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर लूँगी एंड गाइज डोंट ड्रैग इट, जस्ट डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है. एंड नाउ 7 कूल ब्रॉन्जर पैलेट से मैं इस शेड को यूज़ करूँगी फॉर कॉन्टोरिंग एंड ब्रश को थोड़ा सा पिंच करके मैं अपना फेस कॉन्टोर करूँगी. अब मैं जॉ लाइन को भी कॉन्टोर कर लूँगी.
एंड नाउ फोरहेड को कॉन्टोर करूँगी एंड इसको हेयर लाइन तक लेकर जाऊँगी। एंड नाउ विद दिस फ्लैट शेडर ब्रश मैं अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी एंड ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। Next I'm going to use blush in the same Swiss Beauty bronzing palette. अब मुझे जहाँ लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा लाइट चाहिए वहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी। Now I'm applying lipstick. This is Swiss Beauty Soft Matte in the shade 15. And here is the final look.